Om Namah Shivaya, ladies and gentlemen. I am Yuvraj Singh Thakur, founder of Alpha Veda, and I work as a marine engineer for Chevron Shipping. Technically, you people have been in very safe hands with Searainly, and I am here to focus on body, mind, and personality, especially personality grooming, personal interviews, gestures, resume building. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ, I give them a little test, which is stand in front of a mirror and introduce yourself 30 to 40 seconds. Make sure that you maintain an eye contact throughout. उसके बाद honestly review yourself and tell how convinced you are to buy the product standing in front of you. Personality is not just something about introducing yourself, strengths, weakness या जो भी typical 3-4 questions हम सब prepare करते हैं personal interview के लिए. Personality is the aura that you will carry everywhere you go. This is something that will introduce you even before you're physically present before people. इस प्रोफेशन की बात करूँ तो स्पेशली पर्सनालिटी, माइंडसेट, ये चीज़ें हैं जो सरवाइव करने में हेल्प करेगी, विच विल हेल्प यू विन योर बैटल्स. जॉब इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ स्पेसिफिकली. दिस माइट बी अ वेरी बिग थिंग फॉर यू, हैविंग अ शॉट एट योर ड्रीम कंपनी or a matter of fact just a company, but the interviewer, he or she, they've been doing this job for years. So if you fail to stand out from the crowd, or if you do not give the interviewer something that he or she would remember having interviewed you as a candidate, so your chances grow very slim. Marks promise you an opportunity to sit for an interview. They are important, but they do not promise you a job. इस बात को अपने बैच में नोटिस करना. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो टॉपर है ही विल गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट शॉट और ही विल गेट सिलेक्टेड इन द बेस्ट कंपनी, वेयर इन समबडी यू थॉट एज अ लेस डिजर्विंग कैंडिडेट एन अंडरडॉग, ही माइट विन हिज डे, बिकॉज it does not take much to impress an interview. You do not have to do something out of this world, because more than what you say, it's about how you say. अगर तुम बात कर रहे हो, तुम अपनी बात में कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसे लग रहा है कि तुम कुछ रट के आए हो, सो you won't be able to catch the attention, and this is something that is going to lose you what might be your dream job. थोड़े genuine से tips है which is applicable for everyone. First is that you need to be aware of what you speak. हमेशा ऐसे होता है कि कोई भी इंटरव्यूअर एक लिस्ट प्रिपेयर करके नहीं आता दैट आई एम गोइंग टू आस्क दिस कैंडिडेट दीज मेनी क्वेश्चंस. तो जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, वट एवर यू स्पीक, दैट इज़ फ्रॉम वेयर द इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू पिक हिज और हर क्वेश्चंस फ्रॉम. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द क्रॉस क्वेश्चंस दैट कुड बी picked up from your content. And the second thing is that you need to sound ambitious in everything you say. Do not just sound like everybody else who just showed up on the interview day. Convince the interviewer that this person is somebody who actually wants this job. This guy will be an asset. वैसे तो there's an endless list of things that you can do for your personality development, but एक बहुत common चीज़ है which happened to everybody who ever sat for an interview. जब भी तुम इंटरव्यू के दरवाजे से अंदर जाओगे, यू विल बी वेरी नर्वस, विच इज़ नॉर्मल. बट व्हेन यू आर डन विद योर इंटरव्यू एंड यू कम आउट ऑफ द डोर, ऑल द नर्वसनेस वुड हैव डिसअपीयर्ड एंड यू विल स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन योर वे बैक. तुम ये सोचोगे कि यार उस क्वेश्चन का कोई बेटर आंसर हो सकता था या थोड़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए थी. And this is something when winning and losing does matter, because you did not give your 100%. And talking about today's scenario, you might not get a shot in an interview again. तो हमारी कोशिश ये है कि जब तुम उस दरवाजे से बाहर आओ, आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि सर मेरे को वापस नहीं जाना अंदर. आई गेव इट ऑल दैट आई हैड, आई गेव इट माई 100%, और फिर हम देख लेंगे, फिर देखी जाएगी. वट एवर हैपन्स, दैट्स डेस्टिनी.